Hello guys, once again welcome back. I am Abhishek Patenge and today I am here to review this. This is the Royal Enfield Interceptor 650 BS6 version. Well, there are not much changes compared to the BS4. It is identical to the BS4 version. It gets with those same halogen indicators, halogen headlights and analog instrument cluster. I expected Royal Enfield would offer that Google Map navigation which Meteor and recently Himalayan also got that. But that didn't happen. I think that's for future. In future that might come. Well, Interceptor owners never complained about its tech because of that power packed twin cylinder amazing sounding engine, and because of those classy and retro looking looks, especially in this chrome color. It's so attention grabbing, and this motorcycle looks similar to the one of the Triumph motorcycles. Comment down if you know. The design language is inspired from the older Royal Enfield Interceptor which was made in 1960. This is the newer version which was launched in 2017. This is fastest and one of the smooth engines produced by the Royal Enfield, but Royal Enfield would have updated it with bar end mirrors and LED lights, instrument cluster with gear position indicator and time. That would be really helpful, but again no complaints at this price point. It does 0 to 60 in 2.80 seconds and 0 to 100 in 6.32 seconds. That's very impressive. BS4 engine used to produce more power compared to the BS6. BS6 got lost in 0.2 PS of power. Royal Enfield offers 6 color variants in Interceptor. First one is the Silver Spectre, Baker Express, Mark There, Ravish Red, Orange Crush. Last one is the Glitter Dust. Yes, you have heard to the color names. I don't know why these are so complicated. And now let's talk about the price. Price differs from one color to the other. This Glitter Dust costs 3.3 lakhs on road Hyderabad. Make it last forever. Stop in time. And now let's do a detailed walk around. These are the keys of the motorcycle. It gets with this Royal Enfield branding on the key. This is the front look. Most of the parts are finished in circular shape to maintain that retro look. These are the halogen headlamps and these are the boxy halogen indicators which looks very outdated. In the front it gets with 40mm front forks with 110mm travel space. This is the mudguard. It's very sleek. These are the Pirelli tubeless tires with spoked alloys with the tire section of 110/90 by 18 inches with the brake dimension of 320mm. You can opt for a visor which is Royal Enfield genuine accessory. It only improves the aesthetic looks. It doesn't protect you from any kind of wind. This is the Royal Enfield badging on the tank. I think you can see my reflection on tank. This chrome color is very difficult to maintain, and it has this black stripe on tank. Tank grips would have been a good option. Rider can hold the bike with legs. It would be really convenient. And this is the radiator. It gets with liquid cooling and ground clearance is 175mm. And it gets with 648cc 4-stoked SOHC engine. We will talk about power and torque figures while riding. Overall length of the bike is 2122 mm and overall width of the bike is 789 mm. Riding position on this thing is upright. You can clock kilometers all day long. And this is the Interceptor 650 badging, and these are the center set footrests, and these are the chrome finished twin exhausts. The exhausts are upset, so while water crossing or something like that will not be a problem. And this is the side profile. I like this design, but this doesn't feel like a 650cc motorcycle. This looks like a smaller capacity motorcycle somehow. These are the rear suspensions. In the rear it gets with twin coil overshock with 88mm travel, and in the rear it gets with 130/70 by 18 inches with the brake dimension of 240mm. This is the rear tail lamp. Again, this looks very outdated with those boxy halogen indicators.
those twin exhausts grabs all the attention. Nobody really looks at the tail lights. And this is the seat. Easily two people can sit, but the grip levels are not good. It's so slippery. The pillion will fall on the rider while hard braking. And these are the rear foot pegs with Royal Enfield branding on it. And overall height of the bike is 1165 mm, and the seat height is 804 mm. Shorter riders can also easily ride the motorcycle. And this is the fuel cap lid. Let's see, will it comes in hand or it has that hinge in it. This is the Royal Enfield badge again. And now let's open the fuel lid. It has 13.5 liters of fuel tank capacity. It comes in hand. This is very irritating. We have to catch while filling the fuel. Let's close this thing. This thing is closed. And now let's turn on the bike. These are the circular mirrors which are finished in chrome. It gets with same mirrors which Royal Enfield Classic 350 comes with. The older Classic gets with the same mirrors, and it has this bar on the handle. And now let's turn on the motorcycle. It does a full swipe. On the left we have analog speedometer with small screen which shows fuel, odo, trip A and trip B. That's it. It doesn't show any time or gear indicator. On the right we have RPM meter with warning lights like engine check light, neutral, ABS light and all those. And these are the controls. This is for pass, this is for high beam, low beam, indicator switch, and this is on. On the other side we have ignition on off and self start button. And in the center this is the button which we have to toggle through from trip A to trip B. That's it. It has trip A, trip B and odo. And now we are on the other side of the motorcycle. It has this huge engine which looks like a tank with the Royal Enfield branding on it. And here we have some space to keep stuff like mobile, I think. Let's open and let's see if it offers some space or not. We have to insert the key in order to open. This is open now, but there is not much space inside. This is for mechanical use, I think. राइड रिव्यू के पहले आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम बताऊंगा. आप यहाँ से मैं शोरूम से यहाँ तक आ रहे खुद एक ऑब्जर्व किया. अब ट्रैफिक में टॉगल कर रहे खुद यहाँ पे पैर नीचे रख रहे खुद, ये क्या बोलते गियर नॉब या फुट पैक में अड़ रहा पैर. और राइट साइड में और ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इंजन थोड़ा सा बाहर आया और 650 सीसी का इंजन रहे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता. आप सिटी में टॉगल कर रहे तो इस दोनों के बीच में या पैर अटक रहा, नहीं तो इसको टच हो रहा. अगर आप बिना शूज़ के राइड करें तो बहुत ज़ोर के झटके लगने वाले हैं. और अब चलिए राइड रिव्यू करेंगे. सो अभी राइड रिव्यू देंगे. इंजन ऑफ और एग्जॉस्ट साउंड भी सुनो. फ्यूल ले रहा इनला. अभी फ्यूल हो गया था, फ्यूल फिल करा लिए. शोरूम वाले ही आके फिल करे. गाड़ी ऑन, न्यूट्रल. सो एग्जॉस्ट नोट सुनो. इंजन ऑन. अभी भी फ्यूल का मार ले रहा क्योंकि रेडी टू रोल. और ट्विन सिलेंडर है. एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छा है इसका. अभी थ्रॉटल देके देखेंगे. इंस्टेंट पिकअप है, बहुत इम्प्रेसिव है. आपके फेस में वो स्माइल आ जाता थ्रॉटल देते ही. और सस्पेंशन भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाया मगर ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ. टाइम को माइक हैंड दे दिया, ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं करा. क्या कर सकते, अब कुछ भी नहीं कर सकते. तो वॉइस ओवर से मैनेज करना. और लेफ़्ट साइड में स्पीडोमीटर है, उसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडो इन्फॉर्मेशन है. और राइट साइड में एनालॉग आरपीएम मीटर है. बीच में एक बटन है टॉगल करने.
ट्रिप ए और ट्रिप बी दो ही चेंज होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखता। टाइम और गियर पोजीशन इंडिकेटर रहे तो अच्छा रहता था, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोला था। और यहाँ से यू टर्न लेना, टर्निंग रेडियस भी चेक करेंगे, वीडियो में बोला था मगर इसमें ऑडियो नहीं आया ना। इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत इम्प्रेसिव है। ओवरऑल weight of the bike is 202 kgs, but still it doesn't feel like that. You can easily ride in traffic. This gets with 650 cc 4-stroke 2-cylinder liquid cooled DOHC engine, which produce 47 PS of power and 52 Newton meters of max torque. और अब ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। इसके ब्रेक्स बहुत शार्प है, बहुत इम्प्रेसिव है, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट्स बोल सकते हैं। मगर वो ब्रेक में वो फील एंड फीडबैक नहीं है। एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो सॉफ्टर साइड, बैड रोड्स एंड पॉटहोल्स वोंट बी ए प्रॉब्लम, लाइक इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट बट इट गेट्स इट जॉब डन। And riding position is also upright, so we can clock long distances with no hustle, but seat is not comfortable for long distance riding. We have to get the aftermarket seat. और वाइब्रेशंस भी बहुत कम है। फुल थ्रॉटल दिए तो साइड व्यूइंग मिरर्स बहुत वाइब्रेट होते थे, कुछ भी पीछे क्या है नहीं दिखता था, मगर इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत वाइब्रेशंस फील होते हैंडल बार पे और शूज़ पे। ग्लोव्स और शूज़ पहन के चलाए तो वो भी ज़्यादा फील नहीं होता लोअर आरपीएम्स में। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत इम्प्रेसिव है और गियर रेशियोस भी लंबे हैं, अच्छा खासा खींच सकते हैं एक ही गियर में। और आप पर्टिकुलरली ये क्रोम कलर लेने का रहे तो सोच समझ के लेना, क्योंकि ये बहुत अटेंशन ग्रैबिंग है और डस्ट ग्रैबिंग भी है। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या धूल ऐसा कुछ भी रहे तो दिख जाता। और धूप में चला रहे खुद सन का रिफ्लेक्शन सीधा आके मुंह पे गिर रहा, वो बहुत इरिटेटिंग है। थोड़ी देर के लिए मैनेज कर सकते हैं, मगर दिन पूरा ट्रैवल करने का रहे तो गाड़ी में बहुत इरिटेट हो जाते हैं आप। और डिटेल्ड रिव्यू दिया था मगर वॉइस ओवर में वो फील नहीं आता। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लाइक्ड माय वीडियो। इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक दैट subscriber count to 4-digit numbers. So see you soon, bye.